ये क्या हुआ है? हेलो। ये क्या हुआ है? हेलो। हेलो। अच्छा जी। लाइव 5 हो गए हैं। भेज देता हूँ, स्ट्रीम का लिंक एंड बाद में दे दूंगा। 5 पे नहीं 10 पे भेजना है। 10 पे भेजना है। स्ट्रीम चुको था स्ट्रीम। देखो सही चल रही चुप है। रहे। सबर सबर सबर। आवाज बंद कर।
ये लो ये लो। मास्टर साहब किधर हैं हमारे? वो पता नहीं किधर आ जाएगा। WhatsApp कर लो ना। ये की कर रहे हैं? नेट नहीं चल रहा ਤੁਹਾਡਾ? नहीं चल रहा है ये वैसे ही। अड़ी हुई है। ये अड़े क्यों है? अड़े हुए कहाँ हैं? अब देखो। क्वालिटी रुक जाओ यार, मुझे नोटिफिकेशन सेंटर में जाना पड़ेगा। टू नॉट डिस्टर्ब लगा दो ऊपर से ही, स्वाइप करके लग जाता है। नहीं इसका नोटिफिकेशन ऑफ। रुक जाओ, थोड़ा टाइम लेता है। गलत सीन। हेलो, ओ चलो। हाँ, किधर जाऊँ किधर जाऊँ? ये कौन बोल रहा नहीं दस किधर जाऊँ? है? और यार मैं रूम से ज्वाइन ही नहीं हुआ। बाबे तो चल गंदा, हा 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 हा, गंदा गंदा गंदा। मैप दिखाई, मैप। ठीक कर रहा है। आ गया अम्बीन। हेलो अम्बीन। हेलो हेलो। हम बीन भाई कैसे हो? खैर अम्बीन खैर। भाई खुद भी खेलते हो?
चलो जी, चलो जी, भाई गेम पे फोकस करो, आई एम हियर टू कास्ट. चलो लेट्स गो बॉय। ओके भाई, लेट्स स्टार्ट. कौन शुरू करेगा? आप ही, आप नहीं करनी। So welcome back to our most exciting match of Wrangle. The plane pass is, oh shit यार, मैच सर्वर टाइम आउट हो गया यार. चलो चलो कम करो अभी जरा. तो बॉयज वेलकम बैक हो गया तुम सबका दूसरे मैच में। पहले मैच के लिए माजरत वो मैं ज्वाइन नहीं कर सका, और दूसरा मैच यहाँ पे रैंकल और यहाँ पे टीम्स अपने अपने ड्रॉप क्लैशेस की तरफ जाते हुए हमें दिखाई दे रही हैं। और आई थिंक सो यहाँ पे हमें ड्रॉप क्लैशेस बहुत सारे देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी टीम्स ने जंप कर दिया है प्लेन से। और आई थिंक सो सारा मैप पल्ला खाली रहेगा और सारी टीम्स यहाँ पे नोवो मिलिट्री बेस और उसकी पिछली वाली साइड पे देखने को हमें मिल सकती हैं। तो कुबैब भाई क्या चलो मैं आगे? चलो जी कंटिन्यू करो भाई। हाँ, मेरा नाम खुबैब नहीं है वैसे. मैं आप मुझे लगा आप नहीं थे। खुबैब भी हमारे साथ. कासिम भाई, कासिम भाई अच्छा. आज सुनूंगा बस। Okay, so we can see that a lot of teams have dropped down to military. We are going to witness a fight between TFS and the Team Wolf. Both have landed in the area of military base, and we can see two other teams landing in military as well. Team RB, that is in close vicinity of military base, and we can see Team TSS is also near the bridge area. We can see two teams fighting in आगे कर रहा। let's go and witness the fight. Okay, so the drop clash between Team Talash and Team UNS, and UNS Slayer has been sent to lobby. Now we have Team Flash Gunner who is going to take the revenge. Both teams have took their position. Team UNS is now in a disadvantage right now, and let's see who is going to win this fight. What do you say, Shab? बिल्कुल, यहाँ पे टीएफएस और यहाँ पे हमें मिलिट्री बेस में एक क्लस्टर देखने को मिल रहा है। टीएफएस मौजूद है और उनके साथ G3 वुल्व्स बॉयज यहाँ पे मौजूद है, और आई एम श्योर कि यहाँ पे टीएफएस को वुल्व्स के बॉयज इजीली नॉक और फिनिश कर देंगे। इसी के साथ साथ देखें तो मिलिट्री बेस की पिछली साइड्स पे आरबी मौजूद है और टीएसएस भी यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ साथ मिल्टा की बात करें तो मिल्टा में 2 से 3 टीम्स हमें देखने को मिल रही हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम पचिनकी को देखें तो पचिनकी में भी यहाँ पे बहुत सारी टीम्स मौजूद है, लेकिन यहाँ पे आई थिंक सो टीएफएस की तरफ से आई थिंक सो फाइट को अभी इंगेज नहीं किया गया। लेकिन तरफ जाए तो पचिनकी में यहाँ पे यूनस और हमें टीम तो यहाँ पे मौजूद है टीम तलाश ई स्पोर्ट्स मौजूद है। तो इनकी फाइट एंगेज हो चुकी है और यहाँ पे यूएनएस के नॉक्टो ओपी डाउन हो चुके हैं और यूएनएस के 2 प्लेयर्स भी यहाँ पे डाउन पड़े हैं। अब बारी लैगर ओपी के ऊपर आ जाती है कि वो सिचुएशन को किस तरह टैकल करते हैं। जी कासिम भाई क्या कहना चाहेंगे आप? Okay, we'll see the fight of Pachinki after this. After the fight, we're going to witness in military base where TFS Mafia has taken down one, while TFS is making the angles, trying to does not have any good opportunity right now to escape, because I think TK Wolf has gone up to the hill and he's trying to make angle, but TFS Bunny already knows his location. But is TK Wolf doing? TK Wolf has just lost his advantage. I think he knew that the TFS squad is already on the back of the hill, so that leaves the escape opportunity for. But TFS is in free story. Okay, so TK Wolf has knocked down TFS. If he gets knocked, this is very okay. So TFS Draco has knocked down DK Wolf and saving able to survive on 2 man,
and this fight is pretty much over, I guess. If any miracle does not happen by the side of Team Wolf, TFS will get 4 easy kills from here and then move on to the circle. The Team TSS has also made a cluster in the bridge zone, waiting for any teams that are going from military base to attack the teams that are going from military base. So Shahab, I'm going to give the responsibility to you for commentary now. Shahab, bro, are you there? Okay, I think Shahab is not online right now. आगे हो? हाँ करो यार करो. Okay, so TFS Draco is going in the military C buildings, and I think he knows the position of G3 Blaze, and he's trying to knock him down with the nade, a good nade, but I don't think this is going to deal any damage to G3 Blaze. But good work by TFS Cole. He's providing cover to his teammates, making the players of Team 5 going under intense pressure right here. And I think the fire is coming from the top of the hill. Team 5 is very confused right now, and they're just trying to save themselves from the upside and the left side at the core. And I think they play very well, unless okay. So this is good work by Wolf, but couldn't finish the business and knocked down TFS Cole. Good effort, but TFS has taken down this team pretty easy. No big problems right there. And we can see Team RB is having a look at the fight here, um, and seeing if they could get a fight. And we can go to the upper side of shelter, where there's a fight between Team 15 and Team 4, and Team 15 is pushing toward Team 4, and INS Jin is inside, and I don't think he'd be able to do anything because he's surrounded from all the sides. Good effort by INS Jin, knocked down one, but could not finish the business. And Apex APS Toxic 77 will be revived and back on the field. अब आगे वापस या करते रहूं? करते रहो आप नहीं. तो तुम क्यों नहीं कर रहे? मिल्टा पे आ जाओ. मिल्टा सिग्नल पता नहीं क्या हो रहा है यार, ये सिग्नल छोड़ रहा है यार नेट. हाँ मेरा खुद छोड़. आज कोई इशू है यार को भी. टॉप पे FWE एक सेकंड नेट तो चल ले. ओके हाँ आगे आगे अभी नेट आया. एक सेकंड अब जरा उधर जाते हैं. Okay, so there's a fight on the upper side of shelter where 3 teams are fighting with each other, and we are having a fight between Team 11, where Team 11, Team APS, that survived the fight just a moment ago, has been knocked out by Team Scar. Good work by Team Scar X11. He saved his team because he was the last man surviving. 3 of his players was knocked out, but balls of steel, he saved his teammates, because otherwise if he failed right now, the whole team would have died. But he saved all the team. But I think another team is pushing. No team is pushing right now. So this is right now they are safe. Moving toward the Melta, we can see Team 9 is fighting with Team 6, and BS6 Maxi is knocked down. Cannot do anything else. Team FW Rana is pushing toward the other players of Team 9, and I think, yes, BS DIDT saved BSS Kashi, and FWE Malik is knocked out. I think FWE Malik, reviving FWE Malik won't be a big problem if
FW runner reaches it, but reaching there is going to be very difficult. Okay, so a push move by FW runner as well, going out in the open, just giving your kill away. Now BS is in a good position right now, but Smexy will go down. There's no chance of saving Smexy. Now I think it's a 2v1 fight with only FW Kasim is surviving, and he is trying to, I guess, run from here looking for the buggy, and BS is holding their ground. We're going to. Okay, so there is another fight happening somewhere between Team RB and ADF, where RB has sent ADF to home. And good work by RB Redox, getting 3 kills, and RB Thomas saving their team. I at IQ and RB Redox is knocked out for the moment and will be revived easily because there is no team trying to push. Our team is going from there nearby, that is Team 4 RB, but they are not interested in taking any fight right now. So I think at this moment, the situation in the circle is pretty calming. No heavy fights are happening right now. We can see multiple clusters, but no team is trying to fight right now. Just trying to maintain their position and holding a ground and waiting for the circle to make the next shift so they can see which is the best position to play on right now. Most of the teams are coming in the circle. Almost 50% of the lobby is in the vehicles right now, trying to do rotations. Team Scar is moving toward Rozok. I think they're planning to hold the Rozok hill right now, but Team FC is already on the hill. So I think we're going to get a fight between them very soon. ओके यार सर्वर टाइम आउट हो गया यार अब यू हैव टू डू दैट अब तुम्हें थोड़ा सा करना पड़ेगा कमेंट्री तब तक मैं सेट कर लूँ उसको यहाँ पे आरबी के ऊपर आई थिंक सो टीएफएस की तरफ से क्रॉसहेयर तोड़ लिए गए हैं और यहाँ पे क्रॉसहेयर चुपते हुए दिखाई दे रहे हैं और टीएफएस माफिया को यहाँ पे क्योस की तरफ से डाउन किया गया है। अब देखना ये होगा क्या टीएफएस की तरफ से यहाँ पे रिवाइवल दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आरबी की तरफ से रोटेशन डाली गई है और देखना ये होगा क्या आरबी टीएफएस कर पाएगी और रिवाइवल का प्रोसेस यहाँ पे शुरू किया गया है और आते ही ड्रैको को यहाँ पे डाउन किया गया है और डीपीएस के तरफ से रेडॉक्स को के यहाँ पे डाउन कर दिया गया है। अब घेरा डाला गया है टीएफएस के ऊपर से और यहाँ पे कोल्ड को भी यहाँ पे डाउन किया गया है, लेकिन आरबी की तरफ से यहाँ पे टीम पीएफएस सिंगल हैंडेडली एलिमिनेट कर दिया गया है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो जोन ने अपना स्विच ले दिया है और यहाँ पे हमारे पास जो टीम बच के आई हैं इनमें टीम बीएस मौजूद है, एडीएफ मौजूद है और आई थिंक सो एडीएफ और बीएस का आपस में फाइट हमें देखने को मिल सकती है। टीएसएस के बॉयज भी यहाँ लास्ट भी मौजूद है, एफडब्ल्यूई के सोलो प्लेयर भी यहाँ पे मौजूद है, एफसीएस और यहाँ पे डीडी के बॉयज भी हमें जाते दिखा दे रहे हैं और यहाँ आई थिंक सो यहाँ पे हमें टीम कार वर्सेस एफडब्ल्यूई देखने को मिल सकता है। एनी वेस्ट ऑफ टाइम, लेट्स सी क्या एफडब्ल्यूई को है यहाँ पे क्या एफडब्ल्यू तरफ से एफसीएस रश एमवी के ऊपर पुश किया जा रहा है। हम बात करें INS की माइनस ओके मैं आ गया हूँ मुझे दे देना जब हाँ चलो टीम 6 okay so FWE Qasim knows the position of team 17 and I don't think team 17 knows the position. Okay, they know the position and they damaged our team FWE Qasim. Now FWE Qasim is on a very vulnerable position because he is only surviving player of his team, where the other team has 3 of their players alive. Qasim is going to go for the run trying to save his life, but he does not know that he's going straight in the mouth of another team. The team is waiting for him in the compounds, so he made a very good decision of not going to that compound and try to make a different vacant compound for himself to just survive for another bit of time. Meanwhile, Team 12 is holding their ground in the lower part of farm, and I don't think there is any team nearby. Only FWE Carson has
just landed beside them, but he won't be creating any problem for them. ADF is also in the crosshairs as well. I would like to talk about the fight between Team RB and Team TFS, where TFS scored was had a very incompetent game, could not do much and could not do any damage to Team ADF, and Team RB and the Team RB just single-handedly wiped the squad of TFS without having a drop of sweat. Meanwhile, ADF is having a fight somewhere. I will have to take a look. Where is ADF? ADF किधर गई? Okay, so here is ADF. The ADF Scout Obi is back in the lobby with us, and ADF Romeo and ADF Ryzen is in the compound right now. They're inside the zone, but they are not in a very good position. The vehicles will be compromised from this place, and good to see Ryzen trying to change his location, going toward his teammate because his teammate is alone right now, and staying alone at this point will not be easy. ADF Ryzen is in the shack and is surrounded by Team 19. Team 19 is making the angles, but this can be a bad move for Ryzen as well because they both are uh, camping inside a shack, and if any team tries to push on them, they will single-handedly wipe them out. Meanwhile, looking at Circle, the Circle has taken a hard shape favoring the upper side of Puchinki and the lower side of School, and only Team F4 is in the zone right now. They have holded a very good position on the Potato Hill, and for now they have a very good spot for themselves. If they don't do anything foolish here, or they're trying to try to overcommit, they can have a pretty good high kill chicken dinner from here. Going towards Team DT, Team DT is trying to dodge some bullets to, I think, Team KTK, where Team KTK is holding on the upper side of the church, and don't think there's any fight going to happen here as well. Meanwhile, we can see there is a fight going on between PK Bilal and FTW, where, and also in the fight is going on between RB. Let's have a look. Okay, so RB is playing very aggressive right now. We can see that RB is just roaming around in the buggies trying to find some players to kill because they're hungry for kills right now. They're just going out in the wild trying to find players and just going to push on them blindly. They already have 9 kills in the backpack, and I think Agonix Aiko has already spotted out the team of ADF, and he is set to fire on them. He's going if the player of ADF makes any mistake going out or trying to sit in the lobby, the I can take them down and will be able to get 3 kills from here. Okay, so ADF Ryzen is out, and good spray by IQ. He knocked out one. I think they're going for the push here. What is IQ doing? I think IQ is not interested in push and coming back work, and I think he is going to prefer the zone there because the zone is also closing in 39 seconds, and we'll have to see where the zone goes next because like I think 20 to 25% of the area inside the zone is still empty, and there is a place for teams to enter right now. But if it's too late, then it won't be able because they won't be able to enter into zone because there are 40 players alive right now, and the circle is going to shrink again. And this is the time the circle is going to give up good damage as well. There's a fight going to happen between Team PK and the Team 17, where three teams are in a very close vicinity right now. Team Scar, Team FC, and the Team J, and the zone has taken a very central shift, favoring Team FC and Team DT, and Team PK and Team Scar has to come into the zone right now. RB meanwhile, RB Dogs has been knocked out from the zone because I don't think he preferred the zone. Ike is also out of the zone. FW knocked down one player, and Scar has now made their presence felt to Team PK. Team PK did not have any idea that they have one team behind them, and Team Scar has just backstepped them, and now Team Scar is pushing on Team PK, and Team PK Bilal was camping inside the Scar did not know, but what a shot by Team. Um, what a shot by Scar Ladin. He just, even though he did not know the position of PK Bilal, still he managed to take him down. FC Russia
knocked out and finished Victor, and a lot of players are going down with the zone as well because they do not prefer the zone. I think Team Sky is also out of the match. And we have only one player, 8 Sivaji, left of फोर पे हो, Team 19 as well. Team KTK is having fight with Team. Okay, फोर Team KTK is also having fight with um, get a knock inside inside the buildings, and if they get a knock, I think they'll push because they do not have any other option. They have one team in their behind and one team in front of them, and yes, Al Fateh managed to get a knock, but they have a deadly squad of Team RB behind them. RB will not let them go from here unharmed, and IQ just got a knock and finished the play. And Ines, Mikey is all alone right now. He won't be able to do much, but he can fire some bullets on Team RB and try to get someone out of the vehicle or get a kill. But to the zone. But Team DT knows his position, and I don't think INS is going to survive any further because he's inside the zone. He has revealed his position, and he won't be able to do anything further. Going toward Team Talash. Talash has gone to lobby by FW Qasim. FW Qasim was a solo survivor and he has 3 kills right now. He's surviving, and I saw previously that Team FW plays very good, especially Qasim. Qasim has very good game sense. But 8C has gone to lobby. INS Mike, as I said, does not have much time left for his game, has also parted ways with us. Now we're left with 6 teams, 15 players, and only one team is inside the zone. All the teams are outside of the zone. And Agonex IQ has ended the journey of Qasim. Good game by Qasim. Tried to take his team up to the 6th spot where he was the only surviving player. Till he managed to do good. RB Toma is trying to get a knocker to Team 17, and he dealt some good damage to Team 17, but could not get any knocker. Right at the moment, only one team is inside the zone, and that is Team DT with all of their teammates surviving right now, holding a very good position. If they don't do any mistake or give unnecessary knock to any team, I think they'll be able to manage a good kill in here. Meanwhile, Scarladin has knocked out and finished F4 Rafe. We'll have to look where is Scarladin. Scarladin is the only surviving player and has 4 kills in the backpack. He's going toward the zone, but FC Russia knows his position. But FC Russia is also going inside the zone. I think he's going to reveal his position. Good try by Scarlatin, but our FC finisher had a cover of um, the tree and saved himself for that moment, but knocked out by the zone because the zone was very damaging. Team RB had made it inside the zone, and RB Toma knocked out 2 players in one spray. What a game, man! Knocked out 2 players in one spray, and now he will be able to um, get 2 free kills as well. And the IDT is left with only one player. KTK Shahrukh has gone to lobby from the damage of zone, and DT Pain Wolf has knocked out the player of KTK, and Pain Wolf is the only surviving player right now. As I said, they had a very good position in the zone, but could not finish the business because they did not know that RB was in close vicinity of them, and they were just firing from one window. And RB took down 2 players at once. Now RB has that spot where DT was surviving a moment ago, and now DT Wolf has to play for his survival. Last 7 players are left, and I think that he just gave away his location, and now he will be dealing a lot of nades and mollies from the side of Team RB, where Team KTK is not inside the zone. Papaji is almost 26 meters outside the zone. He's going to go for the zone now, but he has very close wall of Team DT Pain in front of him. And Team 17 has been spotted as well. Team 17 has only one player left, that is FC Bilan, 0 kills, trying to manage a knock, but got finished instead by KTK Ghost, but a reflex by KTK Ghost. Now, RB Toman KTK Talha YT and KTK Talha YT like just in open.
could not do anything about it because he was in open, tried to manage, tried to save himself from the bullets. But RB Toma is just very accurate and cannot be avoided. So we have another player that is going to go from the zone as well. DT Payne has knocked out and finished comedy, and we have the last player of KTK as well. And he is outside the zone, out of the game, and a DVS fire from Agon XI at IQ has finished down the game, and RB has 10, 15, 17 kills. You can know what an aggressive gameplay. I think that this team has got the most kills in the game, and other teams are just with 2, 3, 5 kills. What a gameplay by Team RB with only 2 surviving players. They managed to get a chicken dinner. GG's to RB Toma and Agonix IQ as well, and Redox also played well. GG's to FWE Kachim as well, because he managed to take his team to the 6th spot but could not finish the business. But he was only solo survivor, so there was nothing he could do. So we had a pretty good game, and see you in the next game. Bye bye. चलो भाई स्क्रीनशॉट लेके
बोल दी है। कर रहा है आप दोनों अभी यहाँ पर नहीं करेंगे कहते हैं। चलो भाई, आप भी इंग्लिश में करो यार मेरे साथ। मैं करता हूँ ना अब मैं करता हूँ। अच्छा, आप अकेले कर रहे हो? नहीं आप नहीं कर रहे हैं। इकट्ठे करता हूँ जब मैं बोल रहा हूँ आप भी इंग्लिश में करो, जैसे मेरे साथ, जैसे इंग्लिश यार, में है ना। मुझे नहीं पसंद इंग्लिश बोलना, सीधी बात है। यार आपको फायदा होगा कसम से, इंग्लिश अच्छी अब क्या फायदा होना होगी ना। होगा यार, फायदा होता है, लैंग्वेज है। ओ भाई, गुजारिश जितनी बोल लेता हूँ बहुत है बस। चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करो। मैं गेम को स्टार्ट दूंगा, फिर आप कंटिन्यू करना। आपका नाम ले लूंगा। आपका नाम वो क्या है भला? स्पाइसी हुबैब। याद स्पाइसी आ करना गई। है स्पाइसी। चलो हुबैब बोलूंगा। चलो स्टार्ट। जी स्टार्ट। स्टार्ट है। So welcome back with the Mexico of the PUBG Mobile. It's Miramar with the plane, and we have the pilot. His name is DX Wolf from Team 4. The plane is going from Landrilla to Puerto, and Team FC has taken the drop, and other teams are also taking the drop as well. They're going toward El Pozo. Some teams are going toward Montenegro, and some teams are going toward Chumacera. Right now, I think we are going to see a cluster in Montenegro where two teams are headed to Montes. One team is going up and up of the hill, and the other team is going to take the city. And I think we when we were playing PUBG, and we had the same drop as well, and we used to land on the top spot. There are multiple advantages and disadvantages of landing on the top side. You do not get much loot up there, but you have a height angle as well. If you get good loot and you get good scope as well, and multiple teams have landed inside the city, then you can have a pretty good advantage. You can pick up some free kills and then third party after the fight has been finished. But when there is one team that is landed in the city, they gets all the loot, and you'll be only left with some guns and some bullets, because they've taken all their loot to themselves, and you do not get much of the loot on the upper side of the hill. But looking at the zone has taken a central position, not favoring any side. Power Grid, San Martin, Picard is in the center of the circle. We can see there are three teams landed in Picardo. We're going to witness a fight here for them. जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपने आप को खुद ही वेलकम करता हूँ, और वेलकम Okay, टू welcome ऑल for ऑफ। खैर, अगर हम फाइट्स की बात करें तो पिकाडो में जैसे आपने हमें सारा सिनेरियो गाइड किया, तो उसी के मुताबिक फाइट स्टार्ट हो चुकी है। और ईपीएस के एक प्लेयर ने, आई थिंक स्कार के एक प्लेयर को नॉक भी कर दिया है। उनको सॉरी, किल फीड में मैंने ये रीड किया, लेकिन हम नजर दौड़ाएं तब उसे, लेकिन उनको रिवाइव कर दिया गया, और अब उनके क्रॉस बाकी दो टीम से जुड़ते हुए हमें नजर आ रही हैं। फाइट यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। एडीएफ वर्सेस टीम वुल्फ। जी बिल्कुल, टीम वुल्फ के दरमियान फाइट शुरू हो चुकी है, और काउंटर में एक प्लेयर को भी नॉक किया गया एडीएफ के जानब से, लेकिन उनको नुकसान अपने एक प्लेयर का उठाना पड़ा, जो कि अर्ली एलिमिनेट हो गया। अब एडीएफ के नोबिता, एसडब्ल्यूडी के नोबिता की तरफ से एक मोली भी की गई है डैमेज देने के लिए, लेकिन ज़्यादा कारगर साबित नहीं होगी, और उनको रिवाइव कर दिया जाएगा अपने प्लेयर की तरफ से। लेकिन एडीएफ के लिए मुश्किलात बढ़ते हुए वुल्फ की पूरी टीम एक ही प्लेयर के ऊपर चढ़ दौड़ी, और एडीएफ के रेड डॉग्स को इस मैच से बाहर भेज दिया है। लेकिन इसी के साथ टीम 14 के क्रॉसर्स भी टीम 5 के ऊपर जुड़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं। वुल्फ सैंडविच होते हुए हमें नजर आ रही थी, लेकिन अब उनकी तरफ से एक टीम को खदेड़ने की कोशिश कर दिया गया, और उनको लॉबी का रास्ता दिखा दिया गया है। एडीएफ टोटली एलिमिनेट, सिंगल हैंडेडली एलिमिनेट की गई है वुल्फ की तरफ से। लेकिन अब इनके क्रॉस एयर्स टीम 14 के ऊपर जुड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी टीम 14 की
इंटेल पोजीशन की इंटेल मौजूद है कि 25 कहाँ पे आओ, कहाँ पे 25। कौन-कौन सी विसिनिटी ये Okay, so we are going to we are witnessing a fight at near the vicinity of river where UNS Mercy has knocked out KTK Tala and sent him back to the lobby, and he is going to save his teammate as well. Good game by UNS Mercy. He just did not just knocked and finished a player of KTK. Also saved his teammate as well. If he knocked out here, that will be a problem for them. Going to Impala where there is a fight between Team DT and uh, where is Team DT? Kidhar chali gayi? Okay, so where two players of Team DT are sent back to the lobby, and now it's 2v2 fight, I guess, or 2v3 fight. We'll have to see. Okay, so it's a 3v2 fight between Team BS and Team DT, where Team DT Wolf and 11 Exafat are back to the lobby, and and they are closing in on Team 10, and Team 10 won't be able to do much. Meanwhile, in the kill field, we can see another fight is happening somewhere. नहीं इधर ही रहो, I इधर ही रहो। think the fight is जी happening बिल्कुल, in फाइट हमें पिकाडो में Cardo. भी नज़र आ रही है और उसके साथ अगर हम पिकाडो की लेफ्ट साइड में नज़र दौड़ाएं तो हमें मोंटोनियोवो में भी फाइट होते हुए नज़र आ रही है, जिसमें 8C वर्सेस FWE एक दूसरे को इंगेज करते हुए नज़र आ रहे हैं अज़ीज़। Okay, okay. So the both teams are trying to fire each other, trying to deal some damage to each other. But I don't think that we are going to witness a fight very soon here because both teams are so far away from each other, just exchanging some bullets and talking with each other with the bullets. And I don't think unless until some teams knocks down two players, not any team is going to push. Meanwhile, going to Team 25, where Team 25 has I think their close vicinity cleared for now, and only one player of team. Okay, so I think two players of team KTK are intact right now. Pubg has knocked out UNS, knocked OP with his mini 14 good fires, and now UNS Lugger OP knows his position, and UNS player just came in open, and it was very good luck that he did not get knocked, because otherwise that would be a big problem for him. Meanwhile, in the lobby, we can see Team RB having a fight somewhere near El Pozo with Team FC, where FC Rush has been sent out to the lobby, and Team FC is only two players right now for that. जी बिल्कुल, एफसीएस वर्सेस आरबी हमें होता हुआ नज़र आ रहा है और बहुत ही अच्छा आपने इस फाइट को कास्ट भी किया और अब एफसीएस के लिए मुश्किलात बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं क्योंकि पिछले 2 मैचेस में प्रॉपर डोमिनेशन दिखाने वाली टीम से इन्होंने अपने सींग अड़ाए थे, जो कि अभी के लिए उनके ऊपर भारी होते हुए नज़र आ रही है ये फाइट। और एफसीएस बिलाल की तरफ से फॉल बैक किया गया, अपने टीम के सर्वाइवल को ज़्यादा मुमकिन बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसी के साथ अगर हम और मैप की तरफ अगर नज़र दौड़ाएं तो हमें टीम तलाश वर्सेस आईएनएस स्टिल लॉस यूनिट में होता हुआ नज़र आ रहा है और अब थोड़ा सा एक दूसरे को डिसंगेज किया गया है क्योंकि टीम तलाश को ऑलरेडी मैंने डिसएडवांटेज का सामना करना पड़ रहा है, जो कि टीम के टी आईएनएस की तरफ से दिया गया है और स्टिल अभी तक हमें आईएनएस इस फाइट को डोमिनेट करते हुए नजर आई है विद 1 किल। लेकिन अगर हम सर्कल की तरफ नज़र दौड़ाएं और बाकी टीम को भी देखना चाहें तो आई थिंक टीम डीटी को इस मैच से एलिमिनेट कर दिया गया। जी बिल्कुल, उनको एलिमिनेट कर दिया गया है और एडीएफ के दोनों लाइनअप को मैच से बाहर लॉबी का रास्ता दिखा दिया गया है। दोनों ही लाइनअप्स अब लॉबी में बैठ के अपनी जो गलतियां हैं उनको सुधारने की कोशिश करेंगे किसी और सेशन में जाकर। खैर, अब मल्टीपल टीम्स की तरफ से मल्टीपल रोटेशंस हमें देखने को भी मिल रही हैं। इंटरेस्टिंग रोटेशन आप कह सकते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीम्स अगर हम साउथ ईस्ट साइड पे देखें तो हमें यहाँ पे टीम सेटअप होते हुए नज़र आ रहा है। और मेरी गुजारिश रहेगी कि पीछे जिनके भी बैकग्राउंड से ये गेम की आवाज़ आ रही है तो वो थोड़ा सा अपना वॉल्यूम कम कर दें ताकि मुश्किल ना हो। शायद हाँ शायद हाँ हाँ।
ये आवाज आप में से आ रही है? फिर मेरे किसकी से आ रही अपने से आ होगी। रही है? अब आ रही हाँ, है। ये पीछे कम आ रही है लेकिन आ रही है। अब नहीं चलो आ अब रही, सही अब है। नहीं आ रही। हाँ अब सही है। 4K आरबी पे अब आओ, हम फाइट 12 पे। और भी आईएमएस की फाइट स्टार्ट हो चुकी है। अब एक दूसरे के आमने सामने आते हुए हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन उसी के साथ अगर हम बात करें जो आउट ऑफ द सर्कल टीम्स मौजूद हैं उनमें FWE, यूएनएस और आई थिंक यूएनएस से कौन सी फाइट ले रही थी टीम, करने दो। तो आरबी पे आओ यार। टीम टीम KTK, सॉरी, बिल्कुल टीम KTK इस फाइट में एंगेज थी। वो भी सर्कल से अभी बाहर है, उनका लास्ट आरबी राउंड पे भी आओ, हुआ है। फाइन आरबी पे आओ यार। स्कार का भी यार, अच्छा अब सब्र कर ले भाई। यार जो फाइट हो रही है वो बात दिखाओ भी ना, फिर मैं जो आगे पीछे जाता है फिर। दिखाते हैं भाई, ओवरऑल भी तो कोई चीज दिखानी होती तो है। ओवरऑल मैं क्या दिखाऊं, मैं क्या दिखाऊं फिर? आप कभी उधर जा रहे हो, कभी उधर जा रहे हो, कभी उधर जा रहे हो, कभी उधर जा रहे हो। एक फाइट पूरी नहीं हो रही दूसरे भाई पे हम चले। यार यही तो मसला है ना, इसलिए कहता हूँ कि उस टाइम इसीलिए कह रहा था कि भाई आप वो कास्ट कर लो ना साथ। नहीं आप आरबी पे जरा आओ, करो करो करो। आरबी पे आ जाओ, नहीं नहीं मैंने आपको नहीं नहीं कहा नहीं आरबी, आरबी पे आ जाओ। आरबी पे आ रहे हैं भाई, आरबी पे आ रहे हैं, और बोलो। हाँ, जी अज़ाज़ील आप करो यार, जरा इसको स्टार्ट करो फाइट को। Okay, a good fight between RB and Team 4, 4 RB, where Team RB lost their one player, but still managed to take down 3 players of Team 4 KRB. Here, 4 KRB had like 4 of their players alive, but still the 2 players of RB killed 3 players, and now for RB Shadow does not have any other option. Instead of running from here, he's going to play for his survival. Got into his scoop and now going inside the zone. RB is good for now, where we can see there is a fight happening between Team KTK and another team. KTK कहाँ गई? A7 पे आ जाओ। ओके, एक सेकेंड, टीम का नाम बताया करो, टीम नंबर। 21 पे आ जाओ। Okay, so there's a close fight between Team TRZ and A7 as well, and A7 has a good spot. They are on the top and knocked out TRZ Maloon 77, and Naruto is also out of the game. And A7 has a good spot for now. They are going to push inside, and if the TRZ Meloon 77 does not get revival soon before the players of A7 arrives, it will be a big problem for this team. But fortunately, the player of TRZ has revived and is going to heal up now. But A7 Mani has been knocked out. A7 Mani was being very over aggressive, and FTW has just cooled him down. Now A7 Malik is on the top, providing cover for his team, with 2 of his other players are in the close vicinity. One of his players in the close vicinity, and A7 Malik has been knocked out as well. And the journey of Team 23 has been ended out by GSN, and we'll see A7 in the next session, I guess. But Team FC, Team TIZ कार is दे आ good जाओ। for now. And कहाँ पे? 15 15 15। Okay, wait. जी जी बिल्कुल, अगर हम टीम 15 की बात करें, EPS की फाइट लेते हुए नज़र नहीं आ रही। उनकी फाइट अभी तक स्कार के साथ होते हुए नज़र आ रही है, और आई थिंक स्कार को भी सिंगल हैंडेडली लेमिनेट कर रही है और लॉबी का रास्ता दिखा दिया है। लेकिन इसी के साथ अगर हम बात करें और सर्कल की तरफ, तो अभी भी हमें टीम्स जो हैं, मल्टीपल टीम्स हमें सर्कल से बाहर नज़र आ रही हैं, और फाइट अभी तक भी ली जा रही है। लेकिन अब EPS के लिए थोड़ी सी मुश्किलात बढ़ते हुए नज़र आएंगी, क्योंकि उनके बिल्कुल सामने TSS की टीम मौजूद है। अगर वो अपने राइट साइड से इस रोटेशन को रोटेट करते हैं, तो TSS इधर जुड़ते हुए हमें नज़र आएंगे। और अगर इसी के साथ अगर हम टीम 19 पे आए, तो वो अभी हमें
इस अभी तक के लिए कोई भी फाइट लेते हुए नज़र नहीं आए। उनकी तरफ से अभी तक स्टेल्थी मोड अपनाया गया, लेकिन उनके बिल्कुल सामने टीएफएस की टीम मौजूद रहेगी और आई थिंक इनको इंटेल इनके पास मौजूद है और इनके क्रॉसफायर भी उधर जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। 8C के एल्बर्ट टीएफएस कोल्ड की आई थिंक इंटेल ले चुके हैं, लेकिन उसी के साथ जो टीएफएस के प्लेयर कंपाउंड में मौजूद हैं उनके ऊपर भी क्रॉस एयर्स जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कार 98 से आई थिंक ये कोई फटका देने की कोशिश करेंगे और कोशिश की जा रही है एसी के बाकी प्लेयर की तरफ से ज़्यादा हाई ब्रिज को जो है ना चूज किया जाए, लेकिन आरबी भी इनके क्रॉस में आते हुए हमें नजर आ रही है और 8C गैल्बर्ट की तरफ से भी कार 98 पे फायर किए जा रहे हैं बार बार। और अब टीएफएस के लिए भी एक बेहतरीन मौका है कि वो अपने एंगल चेंज ऑफ एंगल करे और इस लोकेशन को छोड़ के अपने लिए रोटेशन मुमकिन बना पाए। अजाजी Obviously, Team 7, like Team TFS, has been very silent all of the game, and I did not notice that they were even playing. I was searching for them and couldn't find them, and also did not see any sign of them in the kill field as well. And now I can see they have 0 kills. They did not engage in any fights, and now they have a very bad spot for themselves as well. They are not inside the circle. The circle has taken a shift as well, and only two teams are inside the zone where BS is holding a good place in the zone, and Team TFS is also outside the zone right now. If they played here, they wouldn't get much kills, or being only being um, uh, circled by the team of that is on their upper hill. Meanwhile, Team TRZ has knocked out the player of Team TSS and finished out TSS Shoru as well. We are going toward Team TSS. Okay, so one player of Team TSS is down, and Team TSS is holding on to their position right now because they are surrounded by too many teams. They have a very good spot in the circle as well. They do not have to do much; just they have to uh, hold their circle right now, hold their position. Meanwhile, Team RB, the champions of last game, are playing aggressive as well. Team RB Chaos has 3 kills, and RB I think is going to have a fight with TSS very soon, and they're going to engage in fight, I guess. Meanwhile, there are no fights happening right now. The circle is pretty quiet, pretty quiet, and I think we are going to witness a comeback from Team TFS, where they lost a fight from RB in the last game single-handedly. Team RB finished them. I think in this game, Team TFS is going to show some miracles to us, but for that they have to go inside the zone and deal with some fights. But right now, I don't think they are interested in going to the fights. TFS has his mini 14 trying to spot on players out of the circle. Meanwhile, RP Toma has knocked out a player and has been knocked out as well by um, Team TSS. Team TSS has sent RB to the lobby, and the journey of RB is close to end, down to the last player with RB Chaos. RB Chaos is going to fight this battle alone, and he has a player of TPS in front of him, and I think he will be able to knock him down because he has uh, got his HP very low. But I don't think I think first he will heal up and will continue the fight. Meanwhile, FW Kazum has knocked out the player of the last team. TSS Segi has knocked out a player of ESP and Witcher. A very aggressive move by Witcher, but got knocked out instead. But his player saved him. Hubeb. जी बिल्कुल। टीएसएस ने बहुत ही अच्छा डैमेज आरबी को प्रोवाइड किया और उनको इसके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा जो टीएसएस की तरफ से दिया गया था और उनको इस मैच से बाहर भेजा गया। लेकिन इसी के साथ अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल एक अलग ही शेप लेके गया जिसमें बीएस और एफडब्ल्यूई और आईएनएस उनको फेवर करते हुए हमें नज़र आया। और अगर हम 8C की बात करें तो 8C अभी तक के लिए हमें फाइट इंगेज करते हुए नज़र आ रही है और केटीके को इस मैच से एलिमिनेट कर दिया गया। अब इनके लिए भी मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आएंगी क्योंकि इनको भी अब सर्कल में रोटेशन देनी है और इनके आई थिंक क्रॉसर टीएसएस और ईपीएस
के ऊपर जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके पास इंटेल तो दोनों टीम्स की रहेगी, लेकिन तीनों ही टीम्स काफ़ी ज़्यादा दूर हैं सर्कल से। क्या ये अपनी अपनी रोटेशन मुमकिन बना पाएंगे या नहीं, देखना ये है उनके लिए आसान रहेगा या नहीं। लेकिन टीम के आईजीएलपी की बिलाल इस टाइम थोड़ा सा स्काउट करते हुए नजर आ रहे हैं, और टीएफएच के ड्रैको भी एफडब्ल्यूई के आई थिंक क्रॉस एयर में आ सकते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से भी स्काउटिंग की जा रही है ताकि वो सर्कल में अपनी टीम का सर्वाइवल मुमकिन बना पाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ सर्वाइव कर पाएं। लेकिन इसी के साथ टीम एफ वो भी हमें एक अपना एंगल होल्ड करते हुए नज़र आ रही है। उनके लिए मुश्किलात बहुत कम नज़र आ रही हैं। लेकिन ईपीएस सीपीएस को देखना ये है कि क्या ये एचसी को बिल्कुल पास में जाके रुकने वाले हैं या नहीं, क्योंकि एचसी के पास अपने क्रॉस जोड़ते हुए बुलेट का भी करना स्टार्ट करते हैं एचसी। Yes, I mean, when the circle is shrinking as well, making players go into the fights. Where Team Wolf is having fight, and Team H is also having a fight with Team TFS as well. We are going to look where the Team TFS is, and the TFS is TFS Draco has spotted down the players of HC, but he's not going to fire because he's in close vicinity of Team FWE. He's trying to get some surprise knock here and then going to push inside the building. Meanwhile, he is vulnerable from the other position. He is going to fire on the players of Team HC, where Team ESP has finished out the FWE Blade, and INS has also knocked out and finished TSP Toxic INS in. Good work by him, and he took the revenge of his teammate, and FWE TFS जी जी कंटिन्यू करें। और इसी चीज़ को तो अगर हम बात करें सर्कल की तरफ, तो सर्कल एक अपनी सेंट्रलाइजशिप ले चुका है, जिसमें बीएस और वुल्फ के प्लेयर को प्रॉपर सर्कल की तरफ से, और आई थिंक टीएफएस की टीम को एलिमिनेट कर दिया गया। जी बिल्कुल, उनको एलिमिनेट कर दिया गया। आई थिंक उनको सैंडविच का सामना करना पड़ा एफडब्ल्यूई की तरफ से और एचसी की तरफ से, जो उनके लिए आसान नहीं था, मुमकिन नहीं हो पाया उनकी तरफ से। अब डीएक्स और 8C एकदम मुंह के ऊपर जुड़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं। मल्टीपल टीम्स अब हमें आपस में फाइट करते हुए नजर आएंगे। इस सर्कल में देखना यह है कि क्या हमें ये 15 के 15 प्लेयर्स 1 मिनट के अंदर अंदर एक टीम की सूरत में करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। कोई भी ऐसा सिंगल स्पॉट नहीं है जहां पे अब कवर ना लिया गया हो, क्योंकि छोटे से छोटे कवर को भी यूज किया जा रहा है इस सर्कल में। और देखा ये जा रहा है कि क्या यहाँ से हमारी रोटेशन मुमकिन हो पाएगी या नहीं, क्योंकि ये लास्ट सर्कल मौजूद है। इस सर्कल के बाद कोई सर्कल नहीं होगा। ड्रोन के बाद ड्रोन की तरफ से जो पुश आएगा इनको, तो वो इनके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह साबित होगा। जजील, हेलो, जी बिल्कुल। हाँ हाँ, करो करो। बिल्कुल यहाँ पे 8C और हमारे पास G3 के बॉयज़ मौजूद है और FWE के भी बॉयज़ मौजूद हैं, और 8C की तरफ से INS को एलिमिनेट कर दिया गया है। अब देखना ये होगा क्या 8C ये चिकन निकाल पाएगी। और यहाँ पे FWE मलिक की तरफ से 8C के एल्बर्ट को डाउन किया गया है। और एक तरह से अगर हम देखें तो 8C यहाँ पे सैंडविच सिचुएशन में हमें नज़र आ रही है, क्योंकि इनके एक तरफ G के बॉयज़ मौजूद हैं और एक तरफ FWE मौजूद है, और FWE की तरफ से पुश किया गया और यहाँ पे 2 प्लेयर्स को यहाँ पे डाउन कर दिया गया है। अब रेहान के ऊपर यहाँ पे सिचुएशन को किस तरह टैकल करते हैं। आई थिंक सो रेहान यहाँ पे स्टिल खड़े हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे ग्रेनेड और मोलीज की जा रही है उनकी तरफ से, और नीचे से यहाँ पे ये क्या है, इसका नेट नहीं चल रहा, पता नहीं नेट नहीं चल रहा होगा। और अब यहाँ पे हालात वाक़यात ये हैं कि G3 वर्सेस यहाँ पे हमें FW नज़र आ रहा है, और यहाँ पे प्लेस वाइट को डाउन किया गया है वुल्फ, और यहाँ पे हमारे पास I8 वुल्फ और G3 वुल्फ
दोनों बचे हैं, 2v2 सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे G3 वुल्फ की तरफ से, टीम वुल्फ की तरफ से चिकन डिनर किया गया। और किल्स की अगर हम बात करें तो इनके पास 15 किल्स अपने बैकपैक में मौजूद हैं। और FWE की हम अगर बात करें तो 8 किल्स इन्होंने किए हैं। और इसी के साथ ये वाला मैच भी हमारा फिनिश होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। तो ये देख लो भाई, TFS वालों के हाल, क्या TFS वालों के हाल। इससे चंगा तो मैं खेल गया। वैसे हमारी आवाज याद ही नहीं हो। और भाई ठीक ठाक। क्या तो कर रहे हैं? हम आ रहे हैं, यहाँ पे आवाजें आ रही हैं हमारी? नहीं, आप आएंगे यार, वो आप और तरह की गल्ले कर रहे थे। अब ऑन है। ये देख लो भाई, TFS वालों के हाल, TFS हाँ हाँ। वालों के हाल। इससे चंगा तो मैं खेल गया। और भाई क्या कर रहे हो? भाई कोई आवाज नहीं आई साड़ी विच। हाँ होना होगी, बाद च खोल, डिले है 1 मिनट। आएगी आएगी। और सुनाओ भाई, खेल रहे हो? ठीक ठाक, इसका ही वेट कर रहा हूँ यार। एक आज ना यार बड़ा वो टाइम लेता है ये बंदा वो तो ये ऑनलाइन वापस होने में। वो रिस्टार्ट करता है ये। मर जा कुछ हो जाए, रिस्टार्ट करने लग पड़ता इसको क्या भी है, GPU वाला। नहीं हमारी आवाज ही कोई नहीं है भाई। है। आ जाती है वो, मैं अब वही देख रहा हूँ, आपने 1 मुझे मिनट बताया। बाद खुलेगी।
पर वैसे कोई भी नहीं आ रही ना जब आपने मुझे इनवाइट किया था। हाँ बंद की। वो फिर पीछे हम बातें कर रहे थे ना, वो फिर गाली गुली निकल। हाँ हाँ हाँ, और भाई सही है सही है। कुछ नहीं तो मैं फिर पिछली गल दसा। जो कुछ हले ना दसियो, आवाज अच्छा बंद करदा फिर दसियो। कोई नहीं, इजी होकर तू आई फिर बताऊंगा तुझे मैं। बाकी आयशा का पता चला? किसका? आयशा का? हाँ यार मैं आयशा का? हाँ यार चंगा बोला। यार यार वो वाकई लड़की वो अच्छी थी यार, आईफोन क्योंकि जैसा डर डर कर कर रहा था ना करेक्टर। वो हाँ हाँ हाँ। आईफोन पे होता है वो इनविजिबल करेक्टर ना। तो ठीक है, मैं फिर आपको ना डीएम में भेज दिया करूंगा। इस तरह मेरी भी जरा सरदर्दी खत्म हो जाएगी अब और वो ना वो हो जाएंगे ना। क्या ठीक कहते है। हैं अपना है वो सिंबल्स ही हैं भाई, वो जो पबजी ना उसको स्पेस काउंट करता है इनविजिबल करेक्टर। अच्छा ते वो अब वो उसने पता नहीं कौन सा डाला है यार, या तो आपने मारा था ना उसके टीममेट को। हाँ हाँ। आप वो अपना मैच प्रीव्यू करो, उसके टीममेट का नाम देखो क्या है, उसकी पॉपुलैरिटी में से निकाल लेते हैं, या देंगे ना उसको वो ओए बता। होए 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 होए। उसका तो नाम सौखा था। मैं तो फोन करूँ डिस्कॉर्ड लाइव करता हूँ। हाँ हाँ उसका लाइव करता हूँ मैं क्या कहते हैं उसका डिस्कॉर्ड में। नाम सौखा था। हाँ मुझे बताओ किसने मारा है। X1 करके कुछ हसन नाम था उसका, स्लैश डाल के हसन। उसका नाम सौखा अच्छा लग जाएगा। पॉपुलैरिटी में होनी है, लाजमी होनी है। हाँ रुक जाओ, मैं ना इधर से आवाज बंद करूँ तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन करता हूँ। यहाँ रहने तो डिस्कॉर्ड, हाँ चलो आओ। अच्छा, आओ आओ, एक मिनट। वो तो हो सकता है। वेब भाई मैं जरा आता हाँ हूँ, ये ठीक है? 10 मिनट तक आता हूँ। फिर समझ रहा है ना। और मैं इमोट कर रहा हूँ, वो लाइव स्ट्रीम में इमोट शो ही नहीं हो रहे किसी किस्म के मेरे। और डिले है, थोड़ी देर बाद शो है, 1 मिनट बाद डिले है, अंदर डिले है, 1 मिनट का डिले है। आ जाओ डिस्कॉर्ड आओ। ओए हो इतना लंबा डिले। वो फिर स्ट्रीम स्नाइप चलो होती है ना, इसलिए डाला है। अच्छा अच्छा, नहीं अच्छा किया वाकई। वरना सारे जो है ना चीटिंग करते हैं यार। ये हाँ बड़ा अच्छा चीटिंग। आप लोगों ने किया डिले का ना। अच्छा चलो आओ डिस्कॉर्ड आओ, मैं हाँ आपको चेक करिए। बताता हूँ। हाँ मैं यहाँ से म्यूट कर रहा हूँ। और डिस्कॉर्ड वाले ने पहला चेंज करके वो वाली कर घुंगड़ियां ही चलो वाली। भाई मैं वेंदा पे सी। चलो कोई नहीं। ओहो फिल्म लगी हुई है। हाँ हौले भाई। हौले कोई और शायरी तो देख ली। चलो भाई अच्छा कहाँ जाना है। वैसे वो भी है दिखाऊं। नहीं रहने वो दो। स्पेशल छुपा के रखी हुई थी यहाँ पे जाके ना, इधर माय स्टाफ है। क्या? फैमिली जंक अंडर प्रोसेस है यार, इधर कहाँ पे गया है। हाँ मैं छोड़ो यार। ओए एक मिनट है, सॉफ्टवेयर कितने ओ यार वो वाकई लब्बा में कितने गया है। ओ शिट, ओ मैं बढ़ जाना। और कितने टोर गई। भरा देख ले वो। आहो केड़ कितने मैं लुकाई सी अंडर प्रोसेस। अंडर प्रोसेस। आवाज आवाजें बंद कर दो। बंद कर दो। मुझे कह रहा है। हाँ माइक म्यूट कर दो स्ट्रीम से। नहीं नहीं मैं ढूंढ लूँ गई कहाँ पे है वीडियोस वो वाली।
unfortunately, we could not witness the plane path, but we can see the circle. The circle has taken a pretty odd, like I can say, pretty odd shift by favoring the upper side, having Camp Alpha and Hatin and the upper island covering 75% of the zone, and the other 20 to 25% has been covered by water. A small portion of the main island is also in the zone, and most of the teams are fighting there. Team RD is in the close vicinity of Team TSS, and Team TSS is also in a close vicinity of another team, but we can see that there is a fight going on between Team NV. Somewhere we'll have to take a look. अब ये किधर fight हो रही है? Team NV की. Sami. Okay, okay. Okay, where 4MV system was knocked out but will be able to get a revive, but instead 4MV Kazi has been knocked out and finished as well. Now 4MV is only 3 men left with they have to deal with 4 players of Team NV, and Team NV is just dominating everywhere, knocking out another player, and now there are only 2 players left of 4MV, and 4MV is in a deep trouble right now, trying to camp just get one knock. But for Vim, what can he do? He knocked out one player and he knocked out another player, and there are 2 men down of 4 MV right now. This fight is a 1v1 even right now, with the last orb on 0 HP getting a revive. Carnage is also low on HP, and Tira is also low on HP. And a push by the team 4MV could end this fight, but 4MV preferred to revive his teammate. And now it's a 2v3 again, where the okay, so NV Carnage has knocked out and finished Floki, and now 4MV is 2 men standing and like 1 man standing. Where you can see now it's back on 2, but I don't think they will be able to do much because they do not have any helmet on them and much health as well. 4MV system has 1 grenade on him, but won't be able to do much. Meanwhile, looking in the kill field, we can see that team 4 FTW is engaged in a fight where FTW Goku has been knocked out, and there are 3 teams in the close vicinity, but we can see FTW Naruto trying to get a knock on team 8 team and great IQ used by team 18. FTW Naruto just knocked out. Team TFS is also in the close vicinity. FTW Blaze knocked out PK Bilal, and team PK is in a deep trouble right now, having only 1 player left, but 8C Albert, good cover by him, but could not do much. And Team FW, by the loss of 1 player, they managed to take 4 players here and finish this fight. Tab is also in the close vicinity, trying to get some kills, and going back to the Shami. 4MV is also having a fight, and we'll have to take a look what 4MV is doing. I think 4MV is back to the lobby, and I think 4MV has left us. We will be seeing them in the next match from now on. Meanwhile, team FTW is 2 men left. I think one of the player was carried out with surprise, and now they will be aware that they have a team in the close vicinity. Other than that, we can see there is a very peaceful environment. Teams are close by each other, but no team is engaging in the fight sharp. Okay, so that. जी 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 बोलो शुरू हो रखो है भाई. शुरू हो जाऊं Yes. क्या बूढ़े बंदों से आपका सुंदर रहता है खैर. वेलकम बैक गाइस, और वेलकम बैक जो भी कास्टिंग पैनल में बैठे हैं जो हैं वेलकम. खैर मैच में वापस आते हैं और हमें टीम नंबर बताया करो. सच ड्रॉप क्लैशेस देख 14 पे अगर हम आए तो अभी हमें फाइट आई थिंक आरडी के साथ होते हुए नजर आ सकती है, जो कि 100 to 150. इधर आओ, टीएच पे आओ. ये जो है इधर इसके नीचे टापों की तरफ. टीएच टीम 20.
मैं समझ गया हूँ। टीम 20 की अगर हम बात करें, स्टोनर ई स्पोर्ट्स हमारे साथ मौजूद है और स्टोनर के क्रॉसर्स टीएसएस के आई थिंक ये सेकंड लाइनअप पे जुड़ते हुए नजर आ रही हैं और स्टोनर को एक के बाद दीगरे 2 नुकसान उठाने पड़े हैं और उनके दोनों प्लेयर्स नॉक हो चुके हैं टीएसएस के प्लेयर्स की तरफ से। क्या अब ये दोनों प्लेयर्स का रिवाइवल मुमकिन बनाया जाएगा या नहीं, क्योंकि स्टोनर ऑलरेडी 2 बंदों का नुकसान उठा चुकी है और इसी के साथ तीसरा भी नॉक हो चुका है और वो भी ब्लीड आउट होते हुए हमें नजर आ रहा है और टीएसएस के प्लेयर्स आहिस्ता आहिस्ता अपना पोजीशन इसी साइड पे बढ़ाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें आईएनएस की, तो वो बिल्कुल स्टोनर के पीछे मौजूद हैं और उनके पास भी इंटेल आ चुकी है कि यहाँ पे 2 टीम्स की आपस में फाइट हो रही है। मुइज को फाइनली एलिमिनेट करके लॉबी भेज दिया गया है। अब देखना ये है कि क्या टीएसएस के लिए ये सर्वाइवल मुमकिन रहेगा या नहीं। लेकिन इसी के साथ हमें ओ आर एन थोड़ा सा टेस्ट मार्क में आरडी के बिल्कुल करीब होते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर हम रूइंस की बात करें तो वहां पे हमें एफ सी एस वर्सेज टीबीएस भी होते हुए नजर आ रहा है अज़ाज़ील। Obviously, and we just saw that the zone has taken a shift as well, dividing the zone 50-50 on the both island, and now both teams have advantage of the zone. Meanwhile, at Runes, team Tabby is going toward the zone. I don't think they have any team in their close vicinity. So team FC was in close vicinity, and they have decided to move back, letting team Tab go into the zone, and then they can cross because they do not want to be back. Me and team 4KR is having a fight as well with team F24, and Leg Legno has knocked out and finished the player of team FCS, and FCS Miracle is also down. HPFCS is on 2 men right now, with the two of their players have departed their ways, and FC Miracle is on a bad spot right now. He's going to deal with a lot of nade, but got knocked out by Not Legend from the side, and Team 24 has left us, and now Team uh, okay, so moving to the Team 10. So you can see 3-1 Pillay is knocked out, and he's going to get a revive. I think the fight is finished here, and 3-1 Pillay got 2 knocks, and GG Vote and GG Flex got 1 and 1 knock. Unfortunate loss of EXP Tala, but that was a trade between between two teams, and you have to deal some collateral damage as well. Meanwhile, looking at the zone, we can see that all teams have come into the zone except Team NV. They are moving on vehicles, and they will be able to join the zone very soon. Team Wolf is in the waters. They are going for the upper hill section, but already team tab TBA team tab has taken down the spot, the higher heavens of Sandhawk, and if the zone goes there, they will have a very good advantage, and they could get a lot of kills from there. Meanwhile, we are going to see the next circle very soon. I think that the zone is going toward the as a Camp Alpha side, a pretty average, I would say, circle, because whenever I play Sanhok, most of the time the zone goes toward the Camp Alpha side, and I think this time, yes, the zone preferred the Hatin Island most. Hatin is the center of this circle. Most teams are going to push toward Hatin. Meanwhile, UNS is there and making their presence felt. Surrounding all the city with two split, and they won't let anyone come near them because they are holding the position and waiting for players to come toward them, and then they will have a good advantage of covers and fires, and they won't let this position to go because they are in the center, and they are going to pick a lot of kills from here. Meanwhile, we can see that Team GG is also approaching to the compounds. For now, the compounds are clear. They will be able to take the compounds, and a good rotation by Wolf as well. Wolf knew that the zone could go to the upper side, and they managed to do the rotation before it was too late. So now I think the circle is going to give us a very intense fights. We'll have to take a look, Hubeb.
जी, बिल्कुल आपने सर्कल के बारे में बहुत अच्छा फरमाया कि वो एक अनप्रिडिक्टेबल शिफ्ट्स लेता हुआ हमें नज़र आ रहा है आज के दिन सनॉक के मैच में। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स भी ये चीज़ मैंने विटनेस की है, लेकिन क्योंकि इसने एक बहुत ही हार्ड शिफ्ट लिया है, तो मोस्ट ऑफ द टीम्स हमें पानी से रोटेट करते हुए नज़र आएंगी, क्योंकि इस टाइम सर्कल के अंदर सिर्फ एक ही ब्रिज है, और वो इस टाइम यूएनएस और जीटी के क्रॉस एयर में हमें नज़र आ सकता है। वहाँ से जो भी टीम आएगी ज़रूर यकीनन उनको यहाँ से नुकसान उठाना पड़ेगा, और उनके मैन एडवांटेज को मैन डिसएडवांटेज में चेंज किया जा सकता है। लेकिन इसी के साथ अगर हम टीम्स की बात करें जो इस टाइम क्लस्टर बनाते हुए हमें नज़र आ रही है, और आई थिंक ठीक है मुझे हमें वुल्फ के प्लेयर आपस में क्लैश लेते हुए नज़र आएंगे। तो देखना ये है कि क्या क्लस्टर्स हमें एजेस पे बनते हुए नज़र आएंगे। जी बिल्कुल ज़रूर नज़र आ रहे हैं, और इसी के साथ हमें आईएनएस और ओआरएन का आपस में क्लस्टर होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इसी के साथ वुल्फ्स के प्लेयर्स आई थिंक 4 KRP के साथ क्लैश लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने मल्टीपल टीम्स के साथ अपना क्लैश शुरू कर दिया है। आपस में फाइट इंगेज की जा रही है। एफटीडब्ल्यू के आई थिंक ब्लेज जो लास्ट मैन सर्वाइविंग हैं, उनके लिए मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं वुल्फ्स की तरफ से। देखना यह है कि क्या एफटीडब्ल्यू के ब्लेज सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं। डीबीएस का फटका देने की कोशिश की जा रही है, क्या ये कारगर साबित होगी। डीबीएस के फटके 0 HP पे आ चुके हैं, और उनको बिल्कुल भी मौका नहीं दिया गया वुल्फ के प्लेयर की तरफ से, और उनको सिंगल हैंडेडली इस मैच से लॉबी का रास्ता दिखाया गया है। जजील Yes, as I said, that Team Wolf has had a pretty good prediction of the zone. They were in the boot camp, and then they went for the water location. And this place is the heaven of Sanhok. However, this place will have most of the game, and a great rotation by Wolf, I would say, that they managed to do the rotation on the time and got some third-party kills as well. Now they're dominating this place, and dominating this place means that they will have pretty good kills. Now only they have to manage the team 16 who are on downrange from them, and I8 Wolf has knocked out a player of 4 RKV, and we'll have to take a look at I8 Wolf. So I8 Wolf has knocked down one player, and now it's a 3v3 fight where I8 Wolf is also dealing some damage from the nades, but won't be able to make any impact. And we last talk has knocked down RD Alpha in the kill field, and RD is out of the game, I guess. So they had last player, and that is also dead. So no, RD is not out of the game, but yes, RD is out of the game now by the players of INS, where we can see a lot of fights happening in the zone. DK Wolf has knocked out 2 players of Team 18, and now the Team 16 is in a great trouble because they are on down range. They won't be able to do much. The players can just jump on them and finish them, and I think they have finished them. A great gameplay by DK Wolf, a very predicted nade, got 2 outings, and then they just finished the game. Meanwhile, TSS is having fight with the SS Thor. Where is TSS? Okay, so TSS is on the edge of Hatin. They are dealing some knocks to the other teams. Team 15 is also in the close vicinity, and there is a cluster in the surroundings of Hatin. Meanwhile, the zone has totally preferred the area of Hatin, and the main island is totally out of the zone. Some teams are trying to manage to get into the zone, but won't be able to do. INS Master has finished out of the zone, and now we can see the team I8 up is also managed to enter into the Hatin, but I don't think that UNS knows that they have a team in the close vicinity, and I8 up is could give surprising blow to team UNS, and UNS does not have any idea that they have a team in their back, and this can be very dangerous for UNS. They can deal some knocks, and then a team 5 can push them and clear them out from here, and that will be a very bad moment for them because they have totally neglected their backside and let a team come into the close vicinity. But the zone has taken a very hard shift. I guess the zone is
mostly open. Now all the teams have to come into the zone. The closest team is Team GG, but they have to go into the zone as well. Now the trouble is for the teams that are in the hard lane, they have to go through a lot of difficulties. Meanwhile, OR and Jose has been knocked out as well outside zone, and the ORN is on their last man surviving ORN Fragger, and he won't be able to survive as well because he's outside the zone trying to heal and won't be able to do anything. Hobab. जी बिल्कुल, अगर हम टीम वुल्फ की बात करें जो कि उनका स्लॉट नंबर 6 बनता है, तो उनको और जीजी के बॉयज़ को अभी तक के लिए फिर सर्कल आई थिंक उनकी तरफ से प्रॉपर डोमिनेशन दिखाई जाएगी और टीम वुल्फ के क्रॉसहेयर्स 4K के ऊपर हमें जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और उनके एक प्लेयर को नॉक भी कर दिया गया है। आई थिंक अब 4K के लास्ट मैन सर्वाइविंग मौजूद हैं, जो टीम नंबर स्लॉट नंबर 13 में मौजूद थी टीम, उनके लास्ट मैन आई थिंक जीपी टीम का लास्ट मैन सर्वाइविंग रह चुके हैं। 2 प्लेयर्स को नॉक कर दिया गया है। वुल्फ के प्लेयर ने पीछे से आके इनको बैक स्टैप किया है, इन पे थर्ड पार्टी की है। अब देखना यह है कि पैसी क्या इस सर्वाइव, लेकिन टीम जीडी जीएलडी एफसीएस क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं। यूएमएस ने भी फटके देना शुरू कर दिए, लेकिन सर्कल में एक अलग ही शिफ्ट अब वुल्फ के लिए मुश्किलात हमें आवाज नहीं आ रही, आवाज कट रही है। डोमिनेट करते हुए उतार नहीं, कब की उतारती हैं, पता नहीं क्यों इशू आ रहा है, समझ नहीं आ रही। आप सही करो करो। हाँ, तो खैर वापस आते हैं, तो जो इस टाइम डोमिनेट करते हुए हमें नजर आ रही हैं, लेकिन उनकी तरफ से स्टिल टीम के लिए भी मुश्किलात बना आ रही हैं। जिस तरह से उनके लिए मुश्किल है सर्कल में जाना, उसी तरह वो भी कोशिश कर रहे हैं कि टीम के मैन एडवांटेज को कम से कम किया जाए। इसी के साथ अब हमें 2 टीम यहाँ पे नजर आ रही हैं। वुल्फ और वुल्फ ने अपनी खुली बदमाशी इधर हमें दिखाई हुई है। किसी भी टीम को आसान हदफ नहीं दिया गया अपनी तरफ से कि किल्स जो है ना उनको दिए जाएं, लेकिन एफसीएस भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेके आगे चल रही है और कोशिश बेकार रहेगी। इस मैच को वुल्फ के प्लेयर्स अपने हक में लेते हुए नजर आएंगे। अज़ील, Yes, obviously, as I said, that Wolf had a very intellectual move by Wolf had played a very intellectual move by moving from the waters and going to the upper hill, because whoever takes the hill is the god of heaven in the Sunhawk map, and he is most probably going to take the chicken dinner if the zone is out in the open and no team has any cover. You can deal a lot of damage from upper side of the hill, and that what Wolf did. They came on the top of the hill, took the sport from other 2 teams because they had 2 fights on the upper hill. They snatched the place, and then they snatched the chicken dinner as well. A good game by Wolf, and a pretty good game, I would say, by team SS as well. But has off to team Wolf. So we end this game here, and I will see you guys in the next match. Bye bye.
हाँ करो शुरू। नहीं अभी रुको रुको रुको, अभी नहीं करो। वो प्लेन अब्दुलरहमान ओ भाई हेलो। ले वो चला गया ही। कौन चला गया, किधर चला गया? पता हाँ अब कर दिया उसने स्टार्ट। वो चला गया सी। ओके कर दो जी। यार आपने वो जो लास्ट में प्लेन ऑप्शन बोला था कि 10-20 सेकंड टाइटनिंग, अगर मैंने टाइटनिंग 10 से हो जाएगा अभी मैं 20 सेकंड तक किया सी तानू, तुसी ते 40 सेकंड दे बैठे हो। चलो हो गया शुरू, बताओ। या मैं क्या तो सिर्फ लास्ट में आता हूँ। कर दो कासे भाई स्टार्ट कर दो। Okay, hello and welcome back to the map of Erangel. Our plane path is going from the city of Giorgio to the city of Yasnaya Polyana, covering Gatka, Runes, School, and the area of Rozok as well. The teams will be easily managed to go toward the Pushinki or Severny if they want, or Lipovka as well. And the teams have started to leave the plane where 4RV is, I guess, going to the compounds near Quarry. And we have another team that is also going with them, that is Team 13. And I think these both teams are planning to go to Primorsk or Ferry Pier, but we'll have to see where they go. Meanwhile, there are multiple teams trying to land near Georgepul area as well. And I think the plane path is not very difficult for the teams to reach the drops, unless their drops are Milta military base or Novopol. Otherwise, team will be easily managed to go to their drops and get some loot and get some vehicles and then set off to continue the game. So all the teams have landed, and the circle is favoring the right side of the circle, where Lipovka and the shelter is the uh, pretty much the center of the circle for now, and only 4 to 5 teams are in the zone for now, and all the other teams have landed near the area of Quarry. Georgipol will have to loot and then find vehicles and go to the circle. Kobab. हाँ जी बिल्कुल। खुश आमदीद सबको और आपको भी अज़ाज़िल। सर अगर हम Thank you. करते हुए नजर आ रहे हैं, आई थिंक अब की दफा थोड़े से टॉप क्लैशेस को भी जो है नजरअंदाज किया गया है टीम्स की तरफ से, लेकिन अभी भी हमें प्री मॉस्क और जॉर्ज सिटी के आसपास हमें जो क्लैशेस बनते हुए आ रहे हैं, और भी हमें क्लियर जॉब क्लैश देखने को मिल चुका है। ओ आर वर्सेस जी बिल्कुल ओ आर एन वर्सेस टी एस एस वर्सेस जी एल डी, लेकिन ओ आर एन पे मुश्किलात बढ़ते हुए नजर आ रही हैं और टी एस एस के प्लेयर्स ने आते साथ ही वक्त कर दिया है, लेकिन ओवरन के बाकी प्लेयर्स भी अलर्ट हो चुके हैं। उनको पता चल गया कि टीएसएस के प्लेयर्स सामने के विसिनिटी में मौजूद हैं और टीएसएस के प्लेयर्स आई थिंक नेड की तलाश में है किसी तरह इस प्लेयर को जो फ्रैगर मौजूद हैं और उनको नॉलेज और एडवांटेज में चेंज किया जाए, लेकिन थोड़ी सी लोकेशंस चेंज की जा रही हैं, थोड़े से कंपाउंड्स को चेंज किया जा रहा है ताकि टीएसएस को चकमा दिया जा सके और इनके प्लेयर्स की तरफ से। लेकिन टीएसएस भी हमें मोहतात होते हुए नजर आ रही है स्टिल। और इसी के साथ अगर हम बाकी ड्रॉप क्लैशेस की बात करें, होपफुली जिन नजर आ रहा है एक दूसरे के साथ फाइट लेते हुए नजर आ रहे हैं, बाकी के ड्रॉप क्लैशेस में फाइट नहीं ली जा रही हूँ अभी तक के लिए, डिसएंगेज किया गया हर टीम की तरफ से। लेकिन जीएलडी के प्लेयर्स भी हमें इधर अपने क्रॉस जमाते हुए नजर आ रहे हैं। तीनों टीम्स के पास ज़्यादा लूट मौजूद नहीं है, ज़्यादा बुलेट्स, हीलिंग्स और बाकी चीज़ें मौजूद नहीं है। जैसे ही उनको जो कुछ भी मिल रहा है वो उनको फ्लेक्स करके एक दूसरे के ऊपर चार्ज इन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज़ादी
Yes, we can see that we are going to witness a very good fight here where three teams have entered into the vicinity of Lvovka. Team 15, Team GLD, and other two teams as well. They are just this place is going to be a chaos in a minute, where three teams are firing bullets on each other, and the TSS Sky has knocked out and finished ORG OS, and ORG is, I guess, two men left now, and Team 15 is also looking for any free kills they might get within this fight. TSS Sky grenade by him but could not generate any outings. Team OIG is back on two men right now, and I think they will go on the back foot here because they are sandwiched between two teams. They are getting fires from all over the place, and they won't be able to do something. OIG Fragger is healing up, but he's getting fired from all of the sides. TSS Sexy has knocked out ORG Fragger, but 11x Arfat took the revenge but could not do much, and left the game with one kill. And TSS Sky is unfortunately not with is not going to be with us for the rest of the game, we are going to witness another fight between GLT and the TSS. And TSS is healing up right now. GLT is not pushing even they knew that the fight was happening between two teams. They could grab this opportunity and finish the team 14, but they did not do any move. They're just camping on their places and not trying to make any move. They're playing very silent, very passive, and that is something I do not see any aggressive team to do while there's a fight happening. You do not camp. You try to third party and get and snatch the kills from the mouse. But I don't think Team TSS knows that they have players in their close vicinity, and Team GL is just camping, trying to generate a knock, and meanwhile Team I8 is having a fight somewhere. Okay, I8 is having a fight near Query uh, with another team, and I Wolf has got one knock, and Team 4K Psycho has banned a player. I couldn't see the name, but we'll look into that again. Meanwhile, I8 Wolf is fighting somewhere. Okay. Okay, so we are having a fight at Primosk as well. Hobab, I would like you to cast this fight because I'm tired. थिंक कौन सी टीम है जी 4K जी बिल्कुल 4K आरवी वर्सेस 4K की फाइट होते हुए नजर आ रही है 4K आरवी ऑलरेडी मौजूद है लेकिन 4K आरवी और अभी तक इनको आवाज नॉट नो आवाज वो आवाज अब आ रही है अब आ रही है यार क्या पता है खैर फाइट की अगर बात करें तो 4K इस फाइट को विन कर चुकी है और फिर 4K आरवी के लिए मुश्किलात हमें बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ भी चुकी थी क्योंकि वुल्फ्स के प्लेयर्स की तरफ से आई थिंक दो प्लेयर्स उधर से सॉरी एक प्लेयर उधर से फिनिश किया गया था और बाकी के तीन प्लेयर्स 4K ने फिनिश कर दिए थे जो कि इनके लिए बहुत इजी था क्योंकि मल्टीपल एंगल्स इनकी तरफ से जनरेट किया गया था और 4K आरवी को लॉबी का रास्ता दिखाया गया लेकिन अगर हम मैप पे नज़र दौड़ाएं तो अभी अब हमें मल्टीपल रोटेशंस होते हुए नज़र आ रही हैं और जो टीम्स सर्कल के एज पे मौजूद हैं ख़ास तौर पे 8C और INS की तरफ अगर देखें तो उनके लिए बहुत आसान रहेगा क्योंकि उनकी तरफ से मल्टीपल टीम्स का गेट कीप किया जाएगा जिसमें सबसे पहले आई थिंक यूएनएस और एनवी आई थिंक 8C की तरफ आते हुए नजर आ रही हैं लेकिन 8C की तरफ से अभी यही फैसला किया गया है कि वो डेड सर्कल की तरफ जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सर्कल शिफ्टिंग के टाइम पे वो सर्कल में मौजूद रहें और इसी के साथ हमें NB UNS FTW और SS सर्कल में पहले इंटर होते हुए नज़र आएंगी और आई थिंक अब हमें इसी साइड पे ज़्यादा से ज़्यादा क्लस्टर्स भी देखने को मिलेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो भी सर्कल में इंटर होंगी जल्दी से उनकी तरफ से आई थिंक सर्कल का एज प्रेफर किया जाएगा वो यही चाहेंगे कि ज़्यादा सर्कल एज पे रह के और ज़्यादा से ज़्यादा फाइट्स विन करते हुए अपने बैकपैक में
किल्स भी डाल सकें और पॉइंट्स भी हम डाल सकें, ताकि ओवरऑल स्टैंडिंग में अपनी जो मजबूती है ज़्यादा से ज़्यादा बना सकें अज़ाज़ील। Yes, and looking at the circle, we can see that but the circle is closing in as well. The teams, there is a cluster in the center of the circle, and most of the teams are in the close vicinity in the shelter area. Meanwhile, I was looking at Team 15, and Team 15 is not doing anything. They're just camping, and I'm very disappointed on them that they're not even trying to take a fight here. They're just camping and trying to take a knock on TSS. Bro, do something. You are here playing competitive. You're not camping here. You have to take fights. This is why you are here. You have to take fights. Camping is not a solution for you. So I would like, if any player of Team 15 is listening to me, please fight. I really want to see you guys fight. Meanwhile, in the kill field, G3 has knocked out a player um, of a team. I guess the team name is UNS. Okay. So this Wolf has knocked down a player. UNS is going to other zone. They dealt some damage, but fortunately, all of the players are alive right now. And Team Wolf is also going into the zone, not trying to engage in any unnecessary fights. And they should not engage in unnecessary fights for now. They have to prefer the circle for now and get a good position in zone. Meanwhile, 3-1 Pile has been knocked out and sent to the lobby. GG Flex has also knocked out a player. Where's the fight of GG is happening? GG की fight किधर हो रही है? जीजी की फाइट जी मैं वहीं देख रहा हूँ, जीजी की फाइट इन्हीं के साथ हो रही है, 8 वालों के साथ। Okay, so 8C has, I think, wiped out players of G by 8CG. His PS sent back to the lobby. Meanwhile, we can see there are a lot of engagements happening inside the zone, especially near shelter. There are multiple teams camping. Some are underground and some are onto the ground. And there is a huge chaos in that spot where TRZ 4P has knocked out a player of 8C and knocked out 8C Albert as well. A very good DBS, I would say, by TRZ 4P Malone 47, and he got 2 kills now, and only one player of teammate is left, that is PK Bilal, and he will be surviving underground for a while. Meanwhile, the zone is closing in within 1 minute, and we'll have to see which side zone favors. I think the zone is going to favor the side of Melta because there's very less cluster at that place. Team FC has the spot for now, and if the zone favors the place, they have a very good spot. Meanwhile, BLD has knocked out a player of TSS. The fight we were looking for a very long time. One player of TSS has been knocked out and finished. GLD Bullies, finally you listen to me, and now you have engaged in the fight. Now TSS is only 2 men left. TSS has gone to the back foot and cannot do much, just can generate some knocks on the other side and try to level this fight on 2v2 2v2 or 2v3, so they will be able to win this fight as well. They have already won a fight here, and will try to look forward to win another fight, but they are on a man disadvantage, so they will try not to make any bad moves here. Meanwhile, FTW, team TZ and team GLE Beast are also taken down a player as well. We'll have to see. Okay, किधर चला गया है यार, सिलेक्ट ही नहीं हो रहा. ओके, आप करो यार. हाँ जी बिल्कुल, सर्कल की आपने बात की थी कि घंटा पावर की तरफ ज़्यादा छुट्टी हो गई है, हम पोस्टर का थोड़ा सा पोस्टर पूरा साथ प्रिज्म के फेवर करते हुए नजर आया है. इसमें हमें टीम्स INS, FTW और JLD आई थिंक, नहीं सॉरी NV की टीम अभी तक के लिए, और साथ में 4MB भी हमें इस सर्कल के अंदर मौजूद नज़र आएगी, और मल्टीपल टीम्स अभी तक के लिए हमें बाहर नज़र आ रही हैं, और उनकी तरफ से बहुत सारी टीम्स जो हैं सर्कल की वजह से बाहर हैं, और उनकी तरफ से रोटेशन की जा रही है. और देखना ये है कि क्या इस रोटेशंस में हमें मल्टीपल फाइट्स देखने को मिलेंगी या नहीं, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर घुसने की कोशिश की जा रही है. एक के ऊपर एक टीम हमें नज़र आ रही है, क्योंकि
ऐसे क्लस्टर्स में हमें बहुत ही अच्छी फाइट्स देखने को भी मिलती हैं और कास्ट करने में तो बहुत ही ज़्यादा हमें मुश्किल हो जाती है। लेकिन अज़ाज़ील, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि ऐसे क्लस्टर्स में आपके अकॉर्डिंग क्या प्रेफरेंसेस होनी चाहिए एक टीम के लिए? I think when there are a lot of take by yourself. When you have a good spot, then you can engage in fights. You do not need to engage in unnecessary fights, because the first thing that you will lose your players, and the second thing is you cannot win the fights when you are not in a position to fight. Meanwhile, Team INS Master has knocked out a player of Team Stoner, and Team Stoner Raza is on his knees, and in the kill field we can see Team I8 is engaging a fight with the Team SS somewhere, and we can see there is a cluster happening near the side of Lipovka as well. I was looking at the team GLD, and their patience has paid them off. They wiped out the team of SS and TSS, and dominated the place. Now they have a very good spot, but they have a team in their close vicinity, and now they have to deal with this team as well. And I don't think Team 15 is going anywhere with this fight, because of their very passive stance. They won't be able to do something. Meanwhile, 4MV player of 4MV has knocked out a player. Somewhere we'll have to see as well. Team Stoner is also out of the game, I guess. No, Team Stoner is two men down now. Stoner Awabi is surviving out in the open, dealing bullets from a team INS nearby, and another player of the team. Another player of Team Stoner is alive as well, but he won't be able to do much. Meanwhile, the circle is closing within 28 seconds, and this time I think the circle is going to take a hard shift on the upper side of the mansion where there is some vacant places, and the team will have to go at that place, because we can see a lot of cluster on the side of prison, a lot of fights happening out there, and DK Wolf has been knocked out by, I guess, a vehicle or something, and TH Mo is sent back to the lobby. Now Team Stone is only one man left, and can just hope for the survival. And as I predicted, the zone has taken the shift. There is a very good spot in the zone. Uh, that is vacant and can be taken. Meanwhile, GLD is having a fight in Lipovka with Team 23, and they have knocked out a player as well. And now it's a 4v3 fight. GLD is just camping to the end and fighting right now, and it's making very difficult for us to cast. So I'd like Hobab to do some casting for now. Then I'll join after that. There are less fights happening. Okay, Hobab. श्योर अज़ाज़ील भाई, इस चीज़ को मैं आगे लेके चलूँगा और मेरे लिए भी एक खुशैन चीज़ है कि मैं ऐसी रोटेशंस को देखते हुए कास्ट करता हूँ। लेकिन हम मैच की तरफ वापस आते हैं, तो अभी तक के लिए हमें मल्टीपल टीम्स अपने मैन डिसएडवांटेज पे नज़र आ रही हैं, लेकिन अभी तक अगर हम देखें तो हमें स्क्वाड और कुछ बंद जो नज़र आ रही है, वो अब Was. सर्कल में अपने बनाते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्योंकि अब सर्कल जितना ज़्यादा श्रिंक होता हुआ नज़र आ रहा है, उतना ज़्यादा क्लस्टर्स बनते हुए आ रहे हैं। 4MB ने एक बिल्कुल ही जो लास्ट मैन सर्वाइविंग उनके सामने से रोटेशन देते हुए सर्कल के अंदर अपनी जगह बनाई है, और लिपोवका के अंदर हमें थोड़ा सा जो है मछली बाजार बनते हुए नजर आ रहा है, और जो है ना हिस्सा बांट रहे हैं, तो क्यों ना हम अब भी इसमें हिस्सा बांटे। के लिए स्टेल्थ मोड में हमें नजर आ रही थी, तो अब उनकी तरफ से चार्ज इन शुरू किया गया, और 4MB जैसे ही पुश कर रही थी, उसी के साथ ही उनको बैक स्टैप किया गया है GLD के प्लेयर की तरफ से, और भी GLD जो है ना मुश्किलात बनाते हुए नजर आ रही है, और 4MB के मुजरिम रह गए हैं, जो कि आई थिंक थोड़ी देर में हमें शायद इस लॉबी से इस मैच से जाते हुए नजर आए अपनी टीम के साथ। GLD के प्लेयर्स जरा सा भी उनको मौका नहीं दे रहे, लेकिन 4MV के मुजरिम की तरफ से एक बेहतरीन नेड कुक किया गया और चेकअप को नॉक कर दिया गया है। 4MV के मुजरिम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो उनकी तरफ से नेड से ज्यादा किल्स जनरेट किए जा रहे हैं, ताकि अपनी टीम का सर्वाइवल मुमकिन ज्यादा ना बना पाए, कम से कम नंबर ऑफ किल्स अपने
पॉकेट में रख सकें। और जीएलडी के लीड के क्रॉस एयर्स इधर हमें जुड़ते हुए नजर पिन फीड की बात करें तो एफसीएस वर्सेस एनबी होते हुए हमें नजर आ रहा है। उसी के साथ एफसीएस आरडी के साथ भी अपने सिंग लड़ते हुए हमें नजर आ रही है किल फीड के अंदर। तो एफसीएस आई थिंक टोटली एलिमिनेट हो चुकी है। और इसी के साथ टीम 12 भी अपने प्लेयर्स को लेकर ऊपर आ चुकी है जीएलडी के ऊपर। और जीएलडी के दूसरे प्लेयर को भी नॉक कर दिया गया, लेकिन जीएलडी के लीड जो कि मौजूद हैं उधर और उनकी तरफ से कोशिश की गई, लेकिन ज्यादा कर उतना हो पाई और एसएस के प्लेयर की तरफ से नॉक और फिनिश हो चुके हैं। जीएलडी के लास्ट मैन एडवर्ड मौजूद हैं, क्या वो बीस्ट को रिवाइव दे पाएंगे या नहीं? जीएलडी जो इस विसिनिटी में लिपोवका की विसिनिटी में हमें डोमिनेट करते हुए नजर आ रही थी, अब उनके लिए मुश्किलात बढ़ते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि एक बाहर के बंदे ने आके इधर पोशन किया और उनके 3 प्लेयर्स को आई थिंक लॉबी का रास्ता दिखा दिया है। अज़ील Yes, a very good game by SS Anda of Team 15, and now Team 15 is on their last man surviving. He also knows the position of this player as well. Edward is on a very bad spot. I would like to I appreciate Team GLD. They were having multiple fights as once. They were having fight with 4 MVSS and NV as well. NV is dealing some damage to them from the backside, but GLD managed the fights very good. And now unfortunately there are one man left, and he will be going for the survival. So SS Anda has taken down the last player of 4MV, and now 4MV is out of the game, where DX Fruity has knocked out DD Pika, and Luffy has knocked out FTW Blade, and I think RD is out of the game by NV Fearless, and now NV Fearless has 2 kills, but they have to go inside the zone, and we Carnage is in the um, car and going toward the zone. Meanwhile, the zone is closing and all teams are trying to go inside the zone. There's a cluster happening on the downside of the zone where I Up is also having a fight. I Up is knocked out, and NV Fearless has also been knocked out as well and sent to the lobby. I Up Aga is the last man surviving. Knows the position. IMV Master knocked him down and going to finish him. Other players won't be able to save him. One of the player is outside the zone with 0 HP. Just came into the zone. ADF Redox finished the player of SS under ending his journey in this game. And Edward is also outside of the game, and we can see that a lot of solo survivors that were surviving for the team are out of the game now. We are left with only 6 teams now. 18 players are intact, and Wolf has knocked out Fruity and finished. Ida Aga is in a very bad spot. He is going to deal with a lot of nades. Meanwhile, we can see that ADF Redox is also dealing some damage on a TBX Stoner, Stoned, and TBX Stoned won't be able to get a revive. ADX Redox finished him, and now only one player of Tab is left, and he is also finished out by INS Mirza. And now we have only 5 teams left with one solo survivor of team I8 Up, and I8 Up Aga is also out of the game. Now we are back. We are on our 4 teams left with team FTW, team 4K. 4K had a fight in the Promosk as well, and team INS and team Redox. Sajaz dealt knock to SWT Nobita, and Nobita is on his feet now. And ADF Redox is also dealing some damage, and Sajjad actually finished out the player of team ADF. Now ADF Redox have to go into the zone, but I don't think they will let him come into the zone, and he will be heal battling for the moment. And if he makes up to the zone, that will be a miracle. But INS is not going to let him inside the zone. INS also has to go inside the zone as well. FTW has a good spot in the zone, and INS Mirza has been spotted out by TRZ Malone, and one player of team 11 is left now, that is DX Wolf, and he is the solo survival, and I think his position is also compromised. FTW plays is throwing nades on him, and I think at any time soon he's going to be spotted by TRZ. Malone has spotted him down. He has 5 kills in his backpack, and now we have 2 teams left with a 3v4 fight where
has team FTW has a pretty good higher advantage, but team 4K has a men advantage, and also. Okay, so Team 13 has just did an entry knock, and now Luffy is in his a coop trying to push to upward. But I don't think this fight is going to be easy for Team 13 because Team FTW is on the higher end. Hubeb. जी बिल्कुल, टीम 13 के लिए बिल्कुल ही आसान नहीं रहेगा, और टीम 7 आई थिंक, सॉरी टीम 13 कह रहा हूँ, टीम 14 और FTW के एक प्लेयर को नॉक कर दिया गया, नॉक किए गए हैं 1v3 आएगा या नहीं। आई थिंक 1v4 में नजर नहीं आ सका, बहुत ही अच्छा आई थिंक आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, मैं बोल लेता हूँ आप सर। नो गेम स्टार्ट करनी पड़ेगी। पता नहीं, ट्राई कर लो। So a very good game by Team 4K and a very good game by Team TRZ. 4P Malone as well. He has 5 kills in his backpack. That's a very good spot for themselves on the higher end. But 4K managed to get the entry knock, and then the right push from them on the right time got them the chicken dinner, and they have 10 kill chicken dinner. Meanwhile, Team FTW also has 9 kills to themselves, or having only 3 players. That's a very good gameplay. INS Mirza with 4 eliminations as well. Other teams played well as well, but GG's to 4P Malone and the team of 4K as well, they managed to take the pressure. They took the right decisions on the right time, and they managed to get the chicken dinner. So we end this match here. We'll see you guys in the next match. Bye bye. यार तो भाई थोड़ा माइक का कुछ करो यार। यार मैं ना इसको